discourse that's going to come up today is going to be very interesting for all of you. I am Chitra Singh from Dainik Bhaskar, and we are very pleased to bring to you Unlocking Your Mind by Dr. Sunil Prakash. Dr. Prakash उन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे जो हम अपने जीवन में करते हैं लेकिन उन बातों से अनजान होते हैं. ये हमें बताएंगे कि कब, कैसे और कहाँ शुरू होता है जीवन में स्ट्रेस, जो बन जाता है स्ट्रेन, बीमारी बन जाता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते. डॉक्टर प्रकाश हेल्प्स रिलीव स्ट्रेस थ्रू hypnotherapy. First of all, I'd like to introduce to you Dr. Sunil Prakash and then explain to you what is hypnotherapy. Dr. Prakash is a certified clinical hypnotherapist and a radical healer. He also holds certifications like PLT, which stands for Past Life Regression Therapy, and FED, which is a study of foreign energy dynamics or spirit enchantment, जिसे हम लक और इल्लक इन नामों से भी बोलते हैं. As there are many things that induce fear, which leads to stress and is ultimately the cause for strain. In simpler words, he is a healer for physical and emotional issues. There is no despair so absolute as that which comes from the first moments of our first great sorrow, when we have not yet known what it is to have suffered and be healed, to have despaired and have recovered hope. आप सबके मन में ये सवाल होगा, हिप्नोथेरेपी क्या होता है? Does a hypnotherapist hypnotize you and read the problems in your mind? No. A hypnotherapist does not hypnotize you and read problems in your mind, but helps your conscious mind to read the problems in your subconscious mind. Hypnotherapy आपके लिए ज़रूरी क्यों है? Just as all learning is by the conscious mind, which later gets into the subconscious mind and becomes like involuntary actions. जैसे हम कभी जलती हुई मोमबत्ती को छूते हैं तो पहले तो उंगली जलती है, बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स कुछ भी गर्म लगता है उंगली में तो योर हैंड ऑटोमेटिकली पुल्स बैक. इट बिकम्स एन इनवॉलंटरी एक्शन. Our subconscious mind makes an impulse action the moment any such already learned thing is there in the subconscious mind. There are many things we have learned for the good, and just as many things we have learned which are not for the good. हमने सब कब सीखना शुरू किया ये हम भी नहीं जानते. Even before a child is born, there are thoughts that have culminated in the mother's mind, and they become the very base of the unborn child's subconscious thinking. As it has amply been explained in Mahabharata, how Arjun narrated to Subhadra, his pregnant wife, the technique to enter the deadly and virtually impenetrable Chakravyuh of war, where one warrior is surrounded by numerous opposing warriors. But while he was narrating this to her, she slept in between. So, since she heard only half the story, the unborn child could learn how to penetrate the Chakravyuh, but he could never learn how to get out of it. There are numerous other cases that can be cited on the positive and negative effects they may have had on the mind, which is not yet already thinking. For example, जब भगवान महावीर पैदा होने वाले थे, तो उनकी माँ रानी त्रिशला, जिनके सपनों में उनकी महान सोच व्यक्त होती है, and as we all know कि उन्होंने कितने महान पुत्र को जन्म दिया. Have you ever wondered what would have been the circumstances and thoughts of the mothers of Hitler and Mussolini? What would have been the circumstances that molded the thinking of Pol Pot of Cambodia, who ordered huge killing fields and massive human genocide? What is it that drives some of the terrorists to do the things that we cannot even enact on stage? What makes a child's attitude for sharing or complaining destructive or creative? The positive or negative experiences in childhood will later become his subconscious mind and will help him to deal with or give in to stress.
a hypnotherapist helps you to know these things in the subconscious mind which are not for the good and erase its effect. He works on how to convert a negative emotion into a positive one. As it has very correctly been said that the intelligent of the 21st century will not be the ones who can learn, not only learn, but the ones who can learn, unlearn and relearn. It is more difficult to unlearn something than to learn something new. Dr. Sunil Prakash helps you to find out the root cause of a problem and then provides you ways to dissipate these negative, stressful energies, giving people a fresh start in learning how to get along and live stress-free, happier life with emotional fitness. It is never too late to be what you might have been. So let's put our hands together and welcome Mr. Sunil Prakash on stage to give us an enlightening discourse on hypnotherapy and biofield imaging for self-empowerment. Namaskar. People have given good definitions of mind. I will tell you the scientific background, what we consider. Here, in today's discussion, we are following the theory of mind given by John Kappas. He is a very old and renowned psychiatrist from US who has done a lot of research, and after research he came out with this theory which I am going to use today as a theory of mind. And from here our discussion started. आज आप सब सुबह लोग घर से चले थे, बच्चे चले थे, आप लोग सब चले थे, क्या सोच के चले थे? आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? ओके। और आप कैसे आए? आप ड्राइव करके आए? कैसे आए? ड्राइव करके आए, राइट। तो जब आप ड्राइव करके आए घर से यहाँ तक, तो सुबह तैयार हुए, आपने सोचा आज सेमिनार, यू प्लान फॉर दैट, और आप सोचते सोचते आए, तो पूरे रास्ते यहाँ से आप चले और यहाँ तक आए, अब गाड़ी ड्राइव भी करी आपने, आप कुछ सोचते भी रहे होंगे, राइट। तो आपने अपने आप को महसूस करा कि गाड़ी ड्राइव करते करते आपको रास्ता सब मालूम है, सब कुछ है, आपको ड्राइव रास्ते पे कोई कंसंट्रेशन नहीं करनी पड़ी, पर ये सोचते रहे कि हाँ वहाँ हमें क्या सोचने को मिलेगा या हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। That you did and you came here. Multifunction at the same moment. You were hypnotized with this seminar. Am I right? This is what I just wanted to tell you. कि जो चित्रा जी ने बताया कि आज अपने को हिप्नोटिज्म के बारे में जो गलत ख्याल है, जो मीडिया ने, जो और लोगों ने जो हमें प्रचार दिया है कि हिप्नोटिज्म एक गलत चीज़ है, ऐसा नहीं है। हिप्नोटिज्म के अलग अलग मतलब हैं, अलग अलग साइंस हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होता है। मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं कहता, क्योंकि जो स्टेज हिप्नोसिस होता है वो एक डिफरेंट पर्पस के लिए है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। हम जो हिप्नोटिज्म कराते हैं, ये जो हिप्नोथेरेपी है, ये आपको हम हीलिंग करने के लिए देते हैं। आपके अंदर जो इमोशंस, आपके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको करेक्ट करने के लिए समझाते हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि नेगेटिव इंप्रेशन, अब आप ही हिप्नोटाइज होके आए हैं खुद ही, तो आप बताइए that was right or wrong? It was positive because you were hypnotized yourself during the day, throughout the day. You get hypnotized yourself number of times. आप टीवी देख रहे हैं घर पे बैठे, और कोई प्रोग्राम इतना अच्छा होता है कि आप इतने एनग्रॉस हो जाते हैं उस टीवी प्रोग्राम पे कि पीछे से आपको कोई भी आवाज़ देता है, आपको नहीं पता चलता कि आपको आवाज़ दी जा रही है। That means you are hypnotized at that time in that program. So hypnotism is not bad. The way it is used is what makes it bad, and the way it is being publicized by the media or other people, that makes it bad.
Okay, we'll come back to the topic of what is mind. We talked of that soul and mind is an energy which we cannot see. So, I will tell you that this energy of mind is about a circle round your body which is 12 feet in diameter. It is there with each person. The day you are born, you come to this world, and till the day you are dead, till your death. This energy circle is 12 feet and it remains 12 feet in diameter all around you. Now this circle we divide into two portions. One is called the conscious mind and another is called the subconscious mind. This is very important for you to understand here because this is the basic crux of the theory which we are going to talk and what you are going to carry home as a thought, as a memory, as a piece of information which is going to help you out in your emotional and physical benefit. Now, the conscious mind is about 10 to 12% of the total mind. The other portion is the subconscious mind. I will come later. Let me first discuss unconscious mind. What is conscious mind? What do you understand by conscious mind? Can anybody tell what do you understand by conscious mind? Okay. Right. Volunteer? Right. Very good. I think most of the people know most of the things. Something that takes wait for action. Okay. Conscious mind is basically that part of your actions which you take. You decide that now you feel thirsty. So when you feel thirsty, you decide whether you want to have a glass of water, you want to have some limca, or you want to have some coke or a juice. So that is your conscious decision which you decide or take. What do you want? Similarly, when you feel hungry, you go for a food. Or you want to go for a walk, so you get up and start walking. So all these decisions which you take voluntarily, जो आप अपने मन से, अपने लाइकिंग से, अपने टाइम के हिसाब से जो भी एक्शन आप लेते हैं, उसको कॉन्शियस माइंड, वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू लेते हैं. वो डिसीजन आप अपने आप लेते हैं, अपनी इच्छा से लेते हैं. इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जो आप मतलब दैट एक्शन ऑफ ब्रीदिंग जो भी आपकी चल रही है, वो आपके हाथ में नहीं है या आपके हाथ में नहीं है. ब्रीदिंग का जो एक्शन है वो ऑटोमेटिक है. आप उसको बंद करना चाहें तो आप बंद नहीं कर सकते, आप उसको तेज करना चाहें तो आप तेज नहीं कर सकते, स्लो करना चाहें तो आप उसको स्लो नहीं कर सकते. दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस. सिमिलरली बॉडी के अंदर जो रक्तचाप है या जो आपका फ्लो ऑफ ब्लड है या सर्कुलेशन जो हो रहा है, वो भी आपके हाथ में नहीं है. इसी तरह जो भी बॉडी एक्शंस हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है या जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके सारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं. पीछे अभी जब हम माइंड के बारे में पूछा था तो लोगों ने कहा कि ब्रेन एक्चुअली एक मास है बॉडी का और एक पार्ट है बॉडी का जो माइंड उसको कंट्रोल करता है. So brain is just like any part of the body, your stomach, your lungs or your heart, it's just like that. But it is again controlled by the mind. The energy which is there in the mind controls the actions of the brain. We'll come to that, I'll tell you how. So the conscious mind is only 10 to 12% of your total body and subconscious is 88 to 90%. Now, what is the need for the subconscious mind to be so big? Why do we need to have subconscious mind when we are taking decisions of our own life? It should have been the conscious mind. Why subconscious mind? Well, we'll come to that. But let us understand that what are the actions and how does the conscious mind behave? Whatever I do, whatever I see, that all impulses come to the conscious mind.
जो भी हम रोजमर्रा में काम करते हैं या जो भी हम चीजें देखते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड से आती हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, फैमिली हो गई, टीचर्स हो गए, या जो मेरी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स हैं, ये सब चीजें जो हैं जिसके बेस में मैं कोई एक्शन लेता हूँ वो सब कॉन्शियस माइंड में आती है। बाकी जो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी हैं वो भी कॉन्शियस माइंड के थ्रू आते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जजमेंट हो। कॉन्शियस माइंड में मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे को ये काम करना है या नहीं करना है, वो डिसीजन कॉन्शियस माइंड लेता है, राइट। नाउ कॉन्शियस माइंड में जो मैंने देखा, जो सुना, जो करा, वो सब इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में आई। रात को जब मैं सोता हूं तो वो इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड से फिल्टर होकर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाई सबकॉन्शियस माइंड इज सो बिग। सबकॉन्शियस माइंड बिग इसलिए है क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं रोज कलेक्ट कर रहा हूं वो सबकॉन्शियस माइंड एक थैली है जिसके अंदर वो डंप होती जा रही है। और डंप नहीं हो रही है, बेसिकली इट इज जस्ट लाइक ए हार्ड डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर जिसके अंदर हम अलग अलग फोल्डर्स, फाइल और सब बनाते हैं और उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो इसी तरह जो भी हमारी रोज की इंफॉर्मेशन है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके फाइलें बनती जाती हैं और उसमें लिखी जाती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा हार्ड डिस्क हो गया, कॉन्शियस माइंड हमारा सीपीयू हो गया जहाँ के हम जजमेंटल होके अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो इसलिए वी डोंट नीड, बिकॉज हर 24 घंटे के बाद या जब भी हम सोते हैं तो जो इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में है वो सीधी नीचे आ जाती है सबकॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड खाली हो जाता है। So we don't need to have a big conscious mind. A small portion is sufficient for us every day. कभी आप लोगों ने देखा है या अपने आप को ऑब्जर्व करा है कि अगर आप 24 घंटे नहीं सोते तो उसके बाद क्या आपका रिएक्शन होता है? What do you find? कैसा लगता है आपको? Right. Irritation. Okay. Okay. Well, yes, let us understand why this is happening. Because conscious mind की एक अपनी capacity है to have information, as we have said, कि 10 to 12%. Conscious mind can take 4,000 units per minute of information. If you give more, conscious mind अपने को कहता है कि भाई अब मेरे बस की नहीं है। So कभी भी आपने किसी आदमी को बहुत तेज बोलते सुना है तो you are not able to register what he is saying, because the information that is coming when he is speaking so fast that conscious mind is not able to register. Similarly, दिन भर की जो इंफॉर्मेशन है, 24 घंटे की इंफॉर्मेशन है, वो कॉन्शियस माइंड में आती जा रही है और जब तक वो नीचे नहीं जाएगी कॉन्शियस माइंड खाली नहीं होगा, उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि 24 घंटे बाद अगर मैं नहीं सोऊं तो वो इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में फिल्टर नहीं है। अब आप कहेंगे दिन में तो मैं इतने लोग देखता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, तो कितनी इंफॉर्मेशन मेरी फिल्टर होती है? इसका भी एक कारण। अब उधर से कोई लोग बताएं कि जब आप घर से चले और यहाँ आए तो रास्ते में आपने कितने लोगों को देखा होगा? हैं? 1000 लोगों को देखा। क्या आपको सबकी इमेज याद है? नहीं। ओके, तो व्हाट हैपेंस कि जब आप रात को सो रहे हैं तो उन हजारों लोगों में से किसी एक दो की इमेज या फेस आपको याद होगा जिनका फेस आपको देख के आपको अट्रैक्शन हुआ होगा। जिन लोगों का फेस देख के आपको अट्रैक्शन नहीं हुआ उन लोगों का आपको फेस याद नहीं रहेगा। सो क्या होता है कि जब आप रात को सोते हैं तो इंफॉर्मेशन तो दिन भर की बहुत ज्यादा होती है, पर जो इंफॉर्मेशन आपके मतलब की है, जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं, वो ही इंफॉर्मेशन नीचे आती है और बाकी इंफॉर्मेशन आपकी वेंट आउट हो जाती है, या यू थ्रो इट आउट, यू डोंट टेक इट डाउन टू द सबकॉन्शियस माइंड एंड यू डोंट रिटेन देयर।
अगर इस तरह सारी चीज़ों के सबके अगर हम फेस याद रखने लगे तो फिर हमारे पास इतने हो जाएंगे कि हम विल बी टोटली कंफ्यूज। इसीलिए अगर हम जब चलते हैं सड़क पे और हम हजारों लोगों को देखते हैं तो एक दो फेस इसलिए याद रहते हैं कि कोई ना कोई अट्रैक्शन उनके अंदर हमें या कोई ना कोई रीजन उस फेस को याद करने का हमें रहा होगा, अदरवाइज वी डोंट। So that's why the information that comes down, we filter at that time when the information is being coming down to the subconscious mind. So this is important to understand कि भाई कितनी information नीचे जाती है और मैं स्टोर करता हूँ और कितनी मैं स्टोर नहीं करता हूँ। Now subconscious mind is further divided into two areas. One is called modern memory and another is called primitive memory. Now अब ये मॉडर्न मेमोरी और प्रिमिटिव मेमोरी क्या है? मॉडर्न मेमोरी वो इंफॉर्मेशन है जो इस लाइफ टाइम की है, जो मैंने इस लाइफ टाइम में काम करा वो सारी फर्स्ट एरिया ऑफ मॉडर्न मेमोरी में जाती है और आफ्टर माय डेथ ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉडर्न मेमोरी कम्स डाउन टू द प्रिमिटिव मेमोरी. Because now I don't require that information. I am no more. But whatever I have done in this lifetime, that remains with me, with my this area of 12 feet diameter, energy level of mind, that remains there. It doesn't die out. And that all information percolates down to the primitive memory. तो जब से मैं ह्यूमन बीइंग बना, हम पहले क्या थे? स्टोन एज के लोग थे, पत्थरों के साथ अपनी जिंदगी व्यवहार करते थे और लोगों को मारते थे और खाते थे। हमें नहीं पता था कि मारना या खाना अच्छा है, पर हमें अपने एग्जिस्टेंस के लिए ये सब करना पड़ता था। वो सारी मेमोरी अभी भी हम सब के अंदर कि मैं कब शुरू हुआ था और आज तक क्या प्रिमिटिव मेमोरी में स्टोर है। कितनी मैं निकाल पाता हूँ, किस तरह निकालता हूँ, वो एक अपने में साइंस है। दैट इज हिप्नोसिस। दैट इज व्हाट वी टॉक ऑफ पुनर्जन्म और या पास्ट, पिछली लाइफ मेरी क्या थी या मेरी पास्ट लाइफ क्या है। वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट आई वाज इन माय प्रीवियस लाइफ एंड अप टू हाउ मेनी लाइफ्स आई हैव बीन देयर, एंड hypnotherapy can find out all that. So let us understand for today only this much. जो मॉडर्न मेमोरी है इस लाइफ की, वो मॉडर्न मेमोरी एरिया में हमारे पास सब लिखी हुई है, और जो इस लाइफ से पहले की मेमोरी है वो प्रिमिटिव मेमोरी है। डिपेंड करता है आपने कितनी लाइफ जी है, बट जनरली इट्स अबाउट 50-50। बिकॉज इन एनी केस आपकी मॉडर्न मेमोरी जो है फिर खाली हो जाएगी इस लाइफ के बाद। नहीं, प्रिमिटिव मेमोरी तो सारी रहेगी, प्रिमिटिव मेमोरी क्यों राइट ऑफ होगी? नेक्स्ट बर्थ में तो ऊपर की साइकिल कॉन्शियस माइंड और मॉडर्न मेमोरी शुरू हो जाएगी ना, ब्लैंक। जी बिल्कुल, आत्मा के साथ जाती है। हाँ राइट, वो बढ़ता जाएगा तो रेशो अपने आप उसी हिसाब से, पर अपने को ये पता है कि टोटल सबकॉन्शियस माइंड 88 to 90% है, वो उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। राइट, बिल्कुल अनलिमिटेड कैपेसिटी है सर। बट लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि जो मेरी कॉन्शियस माइंड से फिल्टर होके सबकॉन्शियस माइंड में आ गई, वी कैन नॉट इरेज दैट मेमोरी, वी कैन नॉट इरेज दैट इंफॉर्मेशन। अगर हम उस इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकते होते तो वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू रिकॉल अबाउट माय पास्ट लाइफ। जी, वायरस शायद अब जैसे कि कंप्यूटर्स में और मोबाइल्स में आने लगा है,
तो शायद इसमें भी आना शुरू हो जाए, अभी तो आया नहीं है, आगे भी have to see that, right? This is not man-made, this has been made by the universe, and universe doesn't know what is virus. Here I would like to tell you one more thing which actually is not being covered here because we have to have a time limit, but yes, since it has come, there are two factors which is pain and pleasure, which is also important to understand what is pain and pleasure. जैसा चित्रा जी ने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कैंडल लाइट पे मैं उंगली फर्स्ट टाइम रखता हूं तो मेरे को नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर पहली टाइम का एक्सपीरियंस मेरे को दूसरी टाइम के लिए ये बताता है कि मेरे को उंगली वहां ले जानी है या नहीं ले जानी। इसी तरह कॉन्शियस माइंड जो मेरा जजमेंटल माइंड है वो डिसाइड करता है कि मेरी जो ये इंफॉर्मेशन है या ये जो एक्टिविटी है वो मेरे लिए पेन है या प्लेजर। जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है वो उसको मैं प्लेजर कहता हूँ, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसको मैं पेन कहता हूँ। ये समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं उनमें ये बहुत अहम बात है। तो अब जैसे मेरी उंगली जली, पहली दफ़े तो मेरे को नहीं पता चला, पर दूसरी टाइम में अपनी उंगली को वहाँ नहीं लेके जाता क्योंकि मेरा माइंड में ये आता है कि अगर मैं उंगली को फ्लेम के पास लेके जाता हूँ तो एक पेन होता है, इसमें दर्द होता है या मांस जल जाता है जो कि मुझे बाद में तंग करता है, तो वो मेरे लिए पेन बन गया। अगर मेरे को कोई ठंडी चीज़ पसंद है और मैं उसको खाता हूँ तो वो मेरे को अच्छी लगती है, तो मैं फिर ठंडी चीज़ खाता हूँ और ठंडी चीज़ें खाता रहूँगा, वो मेरे लिए प्लेजर हो गया। तो जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है या जो मेरे को बॉडी में से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता वो मेरे लिए प्लेजर है, और जिससे मेरे को दुख होता है वो मेरे लिए पेन। अभी तक इसको यहीं पे रखिए, आगे जब हम चलेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हमने पेन और प्लेजर का कॉन्सेप्ट क्यों सीखा, राइट? यस। Right. In somebody's life, some extraordinary happens, like some kind of accident or some kind of shock or some kind of severe something. Right. After that, where does the previous memory go? Because the person cannot recall what happened in his life, even in present life, or the previous life. मान लीजिए आज किसी का एक्सीडेंट होता है और सीरियस, and after the accident, after 2 years, the person will not remember what has happened in 10 years back. Correct. After the accident, the person even forgets the faces and the names of the person. Then where does all this memory go? That memory is already there in the modern memory. That incident is already there, The incident is there, yes. but you don't want to remember it. And why should you remember it? I'm not talking about the incident. Yes. I'm talking of what happened, whether bad or good, in the childhood time. Or let's say the accident was 5 years back, and what happened about 20 years back, that person cannot recall. That person in your normal life, आपके पास रोज के रोज हर मिनट में इतने मैसेज यूनिट्स आ रहे हैं कि you remain involved in your conscious mind, number one. एंड कॉन्शियस माइंड को जब जरूरत होती है तभी वो सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है, अदरवाइज वो रिट्रीव नहीं करेगा। तो इसलिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपके मॉडर्न मेमोरी एरिया में स्टोर रहती है, दैट रिमेन्स देयर एंड यू मे नॉट रिकॉल इट बिकॉज यू डोंट वांट टू रिकॉल इट। अगर एक मिनट, अगर कोई उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स आएगा आप फौरन रिकॉल करें, अदरवाइज यू विल नॉट रिकॉल। यस जी जी, reincarnation is just like you are remembering your past life. Pardon? Okay. हाँ, देखिए इसमें let us be very clear कि जो हम पढ़ा रहे हैं या जो हम बता रहे हैं वो कापस की थ्योरी है। There are so many theories in this field, and I don't criticize any of them. They are all good. You try to understand. One school of thought gives a theory in a different format. Another school gives it in a different format. आपने कहा था कि
जी लेकिन हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, जी सबके साथ आत्मा आई थी, हाँ, किसी को याद नहीं कि हम क्या हैं। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए आप एक मिनट लेट अस understand one thing, because this is the last I am answering the question, because lot of things are there, you know, which you have to understand, and child से related we have to discuss lot of things. जो आत्मा की आपने बात करी और सब लोगों की बात करी, हमने आपको ये बताया कि माइंड और सोल जो है इकट्ठे रहते हैं, और जो मेमोरी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, और वो मेमोरी इतनी आसानी से रिट्रीव नहीं होती। उसका प्रोसेस है जिससे कि हम उस मेमोरी को रिट्रीव कराते हैं, और हम रिट्रीव जब कराएंगे जब कोई इशू होगा। वो याद नहीं रहता है। वही मैं आपको अभी एक सेकंड सर, वही मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि you can meet me after the class, after this session, you can meet me after this seminar, I'll explain to you. But for the time being, let us understand कि conscious mind में हर मिनट में इतने मैसेज यूनिट्स मेरे पास आ रहे हैं कि मेरे को पुरानी बातों को सोचने के लिए टाइम नहीं है। Let us understand till this stage and finish it here. Let me proceed because time is short, we have got too much to discuss, and after the session, if anybody has any individual question, I am there to answer that. We'll have a question. You write down your questions, and in the end, we'll have a question answer session. Okay. Now we have to understand. We can't see. Okay, I'll just try to do it. From where does anything what I think of originates? Is basically the thoughts. I plan. I just think what I have to do. So the thoughts generate in my mind, and these thoughts, when they generate, they give rise to emotions. कि मैं प्लान करता हूँ मेरे को ये करना है, तो उसको प्लान करते हुए फिर हम देखता हूँ कि मेरे को कैसे करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, तो इमोशंस जनरेट होते हैं, गुड इमोशंस एंड बैड इमोशंस। जब वो इमोशंस जनरेट होते हैं तो वो इमोशंस मेरी किसी लाइफ पे या किसी एक्शन पे इफेक्ट करते हैं। तो व्हेन दे इफेक्ट माय एनर्जी, जो मेरी माइंड एनर्जी है अराउंड, उस पर एक इफेक्ट होता है। तो उस एनर्जी पे जब इफेक्ट होता है तो वो इफेक्ट मेरी बॉडी में जाता है। आई विल गो बैक हियर। जैसा मैंने आपको पेन और प्लेजर का समझाया, वो ही नेक्स्ट स्लाइड की उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कि कॉन्शियस माइंड को तो पेन एंड प्लेजर का डेफिनेशन मालूम है, पर जब वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में आती है तो सबकॉन्शियस माइंड को पेन और प्लेजर का इफेक्ट नहीं मालूम। सबकॉन्शियस माइंड के लिए वही इंफॉर्मेशन जो है सारी एक इंफॉर्मेशन के रूप में है, उसको अच्छाई या बुराई नहीं मालूम। करेक्ट? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? राइट। सो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, everything rotates around this factor, that pain and pleasure, when information of pain and pleasure when it comes to the subconscious mind doesn't know whether it is good or bad. It is a piece of information for the subconscious mind. Then we have seen about thoughts, how do they generate emotions, energy, and how does it affect the physical body. This is what we have to learn here. As already said, because this is a more better slide, thoughts, from how do they generate, from where do they generate? There are various places. Pre-uterine thoughts, environmental thoughts, divine thoughts that we get from the divine. Childhood, जब हम बच्चे थे, हमने क्या एक्शन करा था, हम किस एनवायरनमेंट में रहे हैं, एंड द प्रेजेंट जो आज के सर्कमस्टांसेस में है, those are the thoughts. तो उससे हमें इम्पल्स मिलता है और हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं। थॉट्स जनरेट हो गए, इमोशंस हुए, इमोशंस से इफेक्ट करा हमारी एनर्जी लेवल पे, बॉडी एंड ऑरा पे इफेक्ट हुआ,
उससे अल्टीमेटली हमारी बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट हुआ और फिजिकल बॉडी में हमारे डिजीजेस क्रिएट हुए. हाउ दैट हैपन्स?